हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू पार्ट 13। सो पिछले एपिसोड में अपन लॉर्ड रॉक करके एक गॉब्लिन से मिले थे, जो एक फ्रेंडली गॉब्लिन था। अब उसने बोला है कि वो अपन को रैनरॉक क्या कर रहा है उसके बारे में बताएगा, बट फिलहाल पहले अपन को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसने अपन को कोई पुराना रेलिक खोज निकालने के लिए बोला जो गॉब्लिन्स को बिलोंग करता था। वो अपन ने उसे खोज के दिया। तो उसने बताया कि ये रेलिक यूज़ करके वो थोड़ी देर रैनरॉक का कुछ टाइम तक ध्यान भटका सकते हैं। एंड रैनरॉक किसी चीज़ को ढूंढ रहा है। वो किस चीज़ को ढूंढ रहा है वो अभी तक उसने स्पेसिफाई नहीं किया। आई थिंक आगे वो ये मिशन आगे और कंटिन्यू होने वाला है स्टोरी में, जैसे जैसे अपन प्रोग्रेस करेंगे। एनीवेज, उसके अलावा अपन ने डार्क आर्ट बैटल अरीना करके एक, मतलब तुम बोल सकते हो कि साइड ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली उसमें तुम्हें एक क्लोज्ड अरीना में डाल देते हैं जहाँ पे वेव्स ऑफ एनिमीज आते हैं। टोटल 5 वेव्स ऑफ एनिमीज आते हैं। एंड उन सबको डिफीट करने के बाद तुम्हें कोई एक आधा गियर मिलता है, जो मतलब काइंड ऑफ अपीयरेंस गियर है, जो तुम्हें मतलब अपीयरेंस एनहांस करते हैं। उसका कोई भी स्टैट्स नहीं है। बेसिकली पिछले एपिसोड में जो हमने किया था वो चैलेंज कंप्लीट, अपन को ये मास्क मिला था। सो काइंड ऑफ कूल चीज़ है। एक ये मिला था, एक मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग उससे पहले किया था, मैंने बताया था, तब मुझे ये वाला ड्रेस मिला था जो मैंने पहन रखा है। तो एक्चुअली ये बस अपीयरेंस के लिए, इसका अलग से कोई ऐसा स्टैट्स वगैरह नहीं है। बट यार, आरपीजी गेम है, तुम थोड़ा कूल दिखना चाहते हो तो वो मिशन करके तुम वो सब एक्वायर कर सकते हो। एनीवेज, उसके बाद कुछ मिशंस आए। अच्छा, एक और चीज़ अपन ने किया था, अपन ने एक और नया स्पेल एक्वायर किया था जो बेसिकली स्लो डाउन कर देता है सामने वाले जो एनिमीज या आइटम्स हैं, उनको स्लो डाउन कर देता है। एंड एक कंट्रोल स्पेल है, जैसे लेवियोसो है उस टाइप का एक कंट्रोल स्पेल है। मैडम कोगावा से सीखा था अपन ने। एंड ये रहा वो स्पेल, एरेस्टो मोमेंटम स्लोज बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमीज, गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम टू प्लान योर नेक्स्ट मूव। सो बेसिकली ये कंट्रोल स्पेल्स होते हैं जो सामने वाले एनिमी को या तो स्लो कर देते हैं। बेसिकली कंट्रोल स्पेल्स करते हैं कि सामने वाले एनिमी तुम पे अटैक नहीं करते, वो टाइम बाय करते हैं। तो लेवियोसो आदमी को हवा में उड़ा देता है, ये चीज़ों को स्लो करता है। एंड ये फ्रीज वाला स्पेल तो कम्प्लीटली फ्रीज करता ही है, बट जो तुम्हारा नेक्स्ट अटैक होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये जो फिलहाल येलो वाले स्पेल्स है उसमें ये वाला मुझे सबसे पावरफुल लगा है, ग्लेशियस जो है। एनीवेज, अपने दो तीन मिशंस नए वाले अनलॉक हुआ है। एक सेबेस्टियन वाला मिशन अनलॉक हुआ है, एक मैडम वीजली वाला मिशन अनलॉक हुआ है, जिसमें उसने बोला था कि डीक से बात करने के लिए अपने रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाके। एंड अपन वही करने वाले सबसे पहले। उसके बाद अपन सेबेस्टियन का मिशन करेंगे। एंड अदर दैन दैट कुछ और भी क्वेस्ट अनलॉक हुए हैं, कुछ साइड क्वेस्ट वगैरह, वो भी देखेंगे अपन। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ एपिसोड पहले मैंने बोला था अच्छा ये सब गॉब्लिन्स है करके, तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैंने जितना मुझे याद है मैंने मूवी में कहीं पे गॉब्लिन्स देखा नहीं है। ये Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. वही अपने उसमें था, फैंटास्टिक बीस्ट वाली मूवी में। Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. मिशन डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। एक बार कट सीन खत्म होने देते हैं। First stop will be beyond. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो मूवी में 2 अलग अलग स्पीशीज़ है। एक हो गए एल्फ्स वगैरह जो है, जो टॉबी वगैरह है, तो डीक भी एक एल्फ है। एंड दूसरे जो ग्रिंडॉट्स करके वो जो जगह है जहाँ जो बेसिकली बैंक है अपने ये विजार्डिंग वर्ल्ड का, जहाँ पे वो जो वहाँ पे वर्क करते हैं वो लोग गॉब्लिन्स हैं। तो ये 2 अलग अलग स्पीशीज़ है। मुझे पहले लगा था जब मैंने हैरी पॉटर मूवीज़ देखा था कि ये दोनों सेम है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो 2 अलग अलग जो भी ये गेम में अपने विलेंस है, जैसे रैनरॉक वगैरह हो गए, वो सब गॉब्लिन्स हैं। जबकि ये जो डीक बंदा है ये एक हाउस एल्फ है, बेसिकली एल्फ है ये। तो ये 2 अलग स्पीशीज़ है, लेकिन ये लोग दिखने में काफ़ी सेम है, एकदम ऐसे छोटे से ड्वार्फ टाइप के। एंड वही इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, दिखने में दोनों सेम है। क्योंकि अगर तुम्हें दूसरे मूवीज़ वगैरह याद हो, बेसिकली एल्फ एकदम दिखने में ह्यूमन जैसे होते हैं, ह्यूमन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, और उनके लॉन्ग थोड़े पॉइंटेड ईयर्स होते हैं। बट इसमें वैसा नहीं, इसमें एल्फ भी छोटे हैं एंड तुम्हारे गॉब्लिन भी छोटे हैं। Grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go.
अच्छा, इसने जो बैग अपन को दिखाया ये डेफिनेटली फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड दम, वो जो मूवी में जो मेन बंदा यूज़ करता है एनिमल्स को पकड़ने के लिए, एनिमल्स बोलना ठीक नहीं रहेगा, मैजिकल बीस्ट को पकड़ने के लिए वो है। एंड आई गेस इससे अपन को मे बी अपना माउंट वगैरह मिल सकता है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि अपने पास अभी माउंट ये दोनों क्रॉस्ड है, बस अभी ब्रूम है, तो माउंट अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. तो पहले ही एक पोर्चर का स्लेव था डीक जो है। We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. ओके, इक्विप करना पड़ेगा इसको पहले। तो कुछ एपिसोड्स पहले अपन ने बीस्ट वाले क्लासेस अटेंड किए थे जिसमें तुम उन्हें खाना खिला सकते हो, उनको ब्रश कर सकते हो। तो ये जो एल्व्स है वो लोग मैजिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस यूज़ कर सकते हैं मैजिक, वो लोग बिना वॉन्ड के मैजिक यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड गॉब्लिन्स मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए जब रैंड्रॉक वगैरह मैजिक यूज़ कर रहे थे, तो जब अपन दूसरे विजर्ड्स को बताते कि गॉब्लिन्स मैजिक यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग इतने काइंड ऑफ सरप्राइज्ड दिखते हैं। गॉब्लिन्स मैजिक यूज़ नहीं करते यूजुअली। Tap T and then hover over your knapsack, hold 1 and drag. एक सेकेंड। ओ, मेल और फीमेल है इनमें, ये देखो। Oh, nice. You got one! Settle yourself. I mean you no harm. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. पोशन की बात क्यों कर रहा है वो? You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. चलो चलते हैं। पोचर्स से कौन डरता है भाई? ये तो एकदम चुटकी बजा के निकल गया। इसी चीज़ की बात कर रहा था मैं कि एल्व्स तो बिना वॉन्ड के मैजिक यूज़ कर सकते हैं। एल्व्स वैसे आई गेस नॉर्मल ह्यूमन से भी ज़्यादा पावरफुल। आई डोंट नो ये लोग स्लेव्स कैसे बने। मैंने जो नॉवेल्स है हैरी पॉटर के वो रीड नहीं किए, इसलिए मुझे पता नहीं है। जितना मूवी में दिखाया है उतना ही पता है। Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly.
The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deeg has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. अच्छा लेवियोसो यूज़ करना है उसके बाद knapsack यूज़ करना है. What if I can't find any beast? Any tip for rescuing elusive beast? What was it like working for poacher? Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deek's master was not kind to beasts, or to Deek. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deek will not say more. But Deek is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deek will be waiting. Levioso! There. I'm not going to hurt you. I'll look after you. और था ना शायद. अरे 2-3 और है. इनको छोड़ देते इधर. 3 काफ़ी है अभी. आई गेस और भी अगर पकड़ने रहे तो बैग में जगह नहीं रहेंगी. I rescued a jobberknoll. Deek hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deek knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deek will see you there. आई थिंक एक टाइम अपन बैग में टोटल 10 होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अपन सबसे पहले वाले जो 20 को पकड़ रहे थे ना, तो उसमें से आउट ऑफ 10 लिख के आया था. तो अपन ने 4 वो पकड़े, 3 ये पकड़े, 7 ऑलरेडी हो गए. आई थिंक ये वाला लास्ट होगा शायद. Hello, Deek. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deek will be waiting for your return. टाइम फॉरवर्ड करते हैं. मैप बेसिकली तुम मैप दबा खोल के F दबा के टाइम फॉरवर्ड कर सकते हो. कुछ मिशंस को ऐसा लगता है कि रात में ही कर सकते हो या दिन में ही कर सकते हो, तो उसके लिए काम आता है. Levioso! Professor Howard will never believe this. मिल गया ये. Everything's all right now.
It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. अच्छा, मैंने बताया था ना जब रूम ऑफ रिक्वायरमेंट अनलॉक हुआ था कि यहाँ पे एक लोकेशन है जहाँ पे तुम पेट्स रख सकते हो, तो आई गेस वही रूम अभी अनलॉक होने वाला है. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! Oh भाई. You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. एक सेकेंड, मेरे पास अनआइडेंटिफाइड गियर पीसेस थे. स्कार्फ है, ठीक है, स्कार्फ को इक्विप कर लेते हैं. +18, अरे भाई बढ़िया. एंड डिक्रीज डैमेज फ्रॉम डार्क बॉन्गल्स. वो दिखने में भी सही लग रहा है. ये वाली चीज फैंटास्टिक बीस्ट में थी, ये भी थी, ये जैसा घर टाइप का बना है ना. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Tap H to open the beast management menu. Okay. Select a beast from the inventory to add. The beast can be rescued in islands. Beast can be rescued. Okay. अच्छा, एट द मोमेंट एक ही लगा सकते, हर एक स्पीशीज का शायद एक ही लगा सकते हैं. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. अच्छा, मुझे लग रहा है मैजिकल मटेरियल्स अपग्रेड करने की यूज होता है. When magical beasts are nurtured, they provide material with magical properties. Your beast feed ये ठीक है. beast petting brush दिखाया अपन को. ओके ओके कूल. अच्छा नहीं, तो फिर सीन ये है कि जो बचे हुए बीस्ट अपन ने उठाए हैं इनको यहाँ पे, अच्छा आई गेस यहाँ पे स्लॉट्स है 1 2 3 4. तो अगर तुम इनको अगर इधर डालोगे
अच्छा, मैक्सिमम इतनी होल्ड कर सकते हो। एक्टिव बीस्ट 4 आउट ऑफ 12, स्पीशीज 3 आउट ऑफ 4। इसको हटाऊं कैसे मैं? There. I'm not going to hurt you. आई थिंक बाकी जो बीस्ट है ना उसके लिए जगह बचा के रखते हैं। Wonderful. ये देखो अपन को आइटम्स मिले। एक और होगा ना इधर कहीं पे। ये रहा। यहाँ पे क्या है? ओह, सो आई गेस ये जो एरिया है ना ये काइंड ऑफ एक टेलीपोर्टर बना है। ये एक्चुअल वर्ल्ड का कोई लोकेशन है, कोई सेफ प्लेस है। ऐसा नहीं ये पूरी जगह रूम ऑफ रिक्वायरमेंट ने बनाई है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है पर्सनली। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रूम वगैरह यूज नहीं कर सकते, कुछ बाउंड्री होंगी इधर उधर। ओके, अपन को मटेरियल मिल गया, दैट्स नाइस। कलेक्ट जबरनॉट। अरे मिल तो गया है, उठाना पड़ता है क्या जमीन से? ऐसा कुछ है क्या? अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, हर थोड़े थोड़े देर में वो लोग ड्रॉप करते हैं। I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Conjure enchanted loom. Enchanted loom conjure करना पड़ेगा। किधर गया किधर गया? यहाँ पे लगाने की जगह नहीं है, दूसरे कमरे में चलते हैं। Oh, there we go. Finally upgrade आ गया। Gear features one primary offense or defense stat by default. Magical materials can be used with the loom to add and upgrade a secondary stat or apply traits to your gear.
Multiple small upgrades can yield a meaningful boost in combat power. New beasts can be rescued at Beast Den or unlocked in quest. New trait recipes can be collected in bandit camps. Okay. So जो पहना है उसी को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं. ट्रेड्स अपन, अरे भाई ट्रेड्स तो बहुत सारे हैं. इस पैकेज अपन लेवल 3 वाली ट्रेड स्लॉट लेवल 2 है. ठीक है, तो 2 वाला लगा सकते हैं. ग्रेटली इंक्रीज डैमेज विद क्रूशियो तो है नहीं. ग्रेटली इंक्रीज डैमेज विद, हाँ ये उठा लेते हैं. इसको इक्विप कैसे करना है? ओ इसके लिए भी लगते हैं क्या फेदर्स? ठीक है. अगर तुम्हें ट्रेड्स लगाना है तो उसके लिए भी चीज़ें लगती है, ये मुझे नहीं पता था. ये वाले लग जाएंगे. इनका क्या हिसाब है? डिक्रीज डैमेज टेकन फ्रॉम गॉब्लिन्स. इसमें कुछ अच्छा है. इंक्रीज डैमेज डेल्ट टू कर्स्ड टारगेट. इंक्रीज वेनमस टेंटैकुलर डैमेज, वो तो अपन यूज़ नहीं करते. इंक्रीज डैमेज विद बॉम्बार्डर. इंक्रीज डैमेज विद डिफेंडो अपन यूज़ करते हैं. सो वी कैन एक्चुअली इक्विप दैट. ओके देयर वी गो. ओके अब समझ गया कैसे वर्क होता है ये. Nicely. I should show Deke. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the Vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Okay, there we go. Quest completed. मैंने बीस्ट के कुछ चीज़ें ब्लूप्रिंट्स ना पहले से ख़रीद के रखे थे, तो आई वांट टू सी कि क्या हम उसे लगा सकते हैं. आउटडोर आइटम्स, वैरायटी ऑफ आइटम्स आइडियल फॉर कस्टमाइजिंग आउटडोर स्पेस. अच्छा ये तो कस्टमाइज करने के लिए है. ओके ये भी कस्टमाइजेशन है. ये रहा बीस्ट फीडर बजट. ओके 0 out of 1 conjured. A large beast trough that keeps your beast fed. इसको लगाए किधर बट? ये और बीस्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए, बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए, ये टॉय बॉक्स.
आई गेस ये शायद ज़्यादा फेंसिंग वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ये देखो और भी ऑप्शंस है। इसकी क्या जरूरत है? यहाँ पे क्या घर वगैरह बना सकते हो क्या तुम? दिया तो है काफी सारी चीजें। आई डोंट नो कि स्टेयर्स तुम कैसे यूज करोगे, क्योंकि स्नैप तो नहीं हो रहा है। तो ये फ्लोरिंग है शायद। तो 20 यहाँ पे अपने आप खाना खा सकते हैं क्या शायद? ओह, अच्छा, अलग अलग इसका अलग अलग टॉय है। एक टाइम पे तुम एक ही टॉय यूज कर सकते हो। ओके। उसने देखा नहीं क्या? Levioso! ओके, चलो निकलते हैं यहाँ से। पहले ही एक रूम था जिसको You अपन ने should be proud of all the कस्टमाइज potions करने में you've काफी टाइम लगा। अभी एक और बड़ा सा रूम दे दिया उन्होंने, उसको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। खैर एनीवेज, अपन अपने अगले मेन मिशन पे ध्यान देते हैं। जो एनिमल्स है वो तो मैं ऑफ रिकॉर्डिंग इकट्ठा करते रहूँगा। मैं बता देता हूँ एनिमल्स इंडिकेट कैसे होते हैं। बेसिकली क्या तुम्हें ढूंढना है, ये दिख क्यों नहीं रहा है कहीं पे भी? आई थिंक मैं जूम्ड आउट हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, जूम इन करने पे दिख जाएगा। ये देखो, ऐसे पॉ प्रिंट्स होते हैं। तो एक बार डिस्कवर कर लिया तो उधर कौन से एनिमल्स मिलते हैं, तुम ये नाम पढ़ के, जैसे फूपर डेन है तो उधर तुम्हें फूपर्स मिलेंगे। ऐसे थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पे कुछ और होगा। यहाँ पे जाइंट पर्पल टोड डेन है, तो इन सबको तुम लाके यहाँ पे रख सकते हो अपने जो रूम है। अब सवाल ये कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा एनिमल्स थे उसको इसने किधर देने के लिए बोला था, मैं भूल गया। आई गेस जो टीचर ने बीस्ट का क्लास लिया था ना बाहर, वहाँ पे देने के लिए बोला था। तो वो जो है वो यहाँ पे कहीं पे था। क्योंकि अगर अपन ने बैग खाली नहीं किया तो अगली बार जब मैं और बीस्ट पकड़ने जाऊंगा ये रहेगा, भरा रहेगा बैग। नेक्स्ट मिशन अपन या तो सेबेस्टियन का मिशन कर सकते हैं, या फिर और देखते हैं और कौन से मिशन है। 2-3 मिशन है। लेवल 2 लॉक है। How nice to see you, my young friend. नहीं, यहाँ पे तो नहीं सेल कर सकते। उसने फिर हॉग्समीड में बेचने के लिए बोला था या? हॉग्समीड में, एक्चुअली हॉग्समीड में एक बीस्ट वाला लोकेशन है, शायद वो खुल गया हो, ये वाला ब्रूड एंड पैक। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है इसने ये वाला नाम बोला था। एक बार जाके देखते हैं।
Hogsmeade, here I come. Never been a vampire worth knowing. Hello. Mind you, don't turn quick. If you're stuck with a Duracle... Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Duracle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Duracles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but add it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? ये सब अपन ऐसे खरीद सकते हैं एंड ये इनको बेच सकते हैं अपन. I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. Okay, there we go. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. निफलर्स, ये लोग ऐसे चमकने वाली चीजें चुराते हैं ना, गोल्ड वगैरह. ओके, ये टोड नहीं है मेरे पास एंड ये निफलर नहीं है. इन दोनों को अरेंज करना पड़ेगा. है पेज किधर गया? यहाँ पे एक पेज उड़ रहा था. हो रहा. So that completes मैडम वीजली का मिशन. और कौन से मिशन अपने पास? ये सेबेस्टियन का मिशन है. फाइंड द रिमेनिंग हाउस टोकन्स, ये अलग है. अ फ्रेंड इन डी, टॉक टू सियोरा रायन इन द 3 broomsticks. Siora, the property of 3 broom. Okay, send me an owl request. I met with her in an earliest. अच्छा, owl request है क्या? मैंने देखा ही नहीं. Owl post. ओ ये वाला. ओके. और क्या अपने पास? The man behind the moon so already था. ये वाला एक था. Seems worried about someone, I should speak with her. एक काम करते हैं, ये वाला साइड मिशन एंड अगर ये छोटा रहा तो उसके बाद सियोरो का सिरोना इन दोनों का साइड मिशन आज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेबेस्टियन का मेन मिशन है. तो आई गेस वो अपन अगले एपिसोड के स्टार्ट में करेंगे. एक्चुअली व्हाट ना, सिरोना का मिशन पहले करते हैं क्योंकि ये अभी क्लोज है. तो दूसरे साइड मिशन के लिए अपन को हॉगवर्ट्स जाना पड़ेगा बस. He'll see it was a mistake. Glad you came. Hello, Sirona. I received your owl.
How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. I think मैं ऑलरेडी वहाँ पे एक बार विजिट कर चुका हूँ फास्ट ट्रैवल खोलने के लिए, तो यप जल्दी हो जाएगा ये. एक्चुअली वो जो हैमलेट है, बेसिकली हैमलेट का मतलब आई गेस ये छोटे से विलेज को ये लोग रेफर करते हैं. तो उनके लिए मैंने एक मिशन किया था जिसमें पास में जो गॉब्लिन्स का कैंप था उसको मैंने क्लियर किया था, वहां से भगाया था उन्हें. ये क्या हो रहा था? It's like a place right out of a storybook. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. मेरे पास ऑलरेडी है थोड़ा सा. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those Horklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Hope they know what they're doing. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Accio! Incendio! I know you. It isn't Laura Treadwell's precious God. Window! You've heard quite enough, huh? ये है जो चीज़ें की बात, हॉर्क्लम जूस जो मटेरियल की बात कर रही थी ना, वो ये है. What the hell is this? अच्छा ये आई गेस वुल्फ केव है, वुल्फ का केव है.
इसके अंदर ही जाना था ना कि कहीं और? पता नहीं। To visit the cave to find Zerona's box of letters. Perhaps I'll better have a look around, see if I can find that box of letters. That's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio. Also. अरे यहाँ पे अपन को वो लूमिनोस लगेगा, लूमिनोस किधर गया? Lumos. Confringo. That also works. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Descendo. Flipendo. Defender. अरे मुझे लगा मैंने डॉज कर लिया था। अरे ये डॉज करने के बाद भी अच्छा ही आएगा, सी एक्सटेंडेड डॉज करते हैं। ये करना था, ये देखो ट्रोल का वही उसको पड़ गया। Arresto. Incendio. Expelliarmus. Accio. Glacius. Defender. Defender. Protego. Stupefy. Glacius. Defender. Okay, there we go. Rest easy, my large friend. इस बार जो अपन को नए स्पेल्स मिले थे ना, वो ज़्यादा यूज़ करने का मैंने ट्राई किया अपने पुराने सेट ऑफ स्पेल से ज़्यादा। तो वो एक तो अपना सबसे पुराना सेट ऑफ स्पेल है, बस इसमें लेवियोसो को बदल के मैंने वो स्लो वाला स्पेल लगा दिया। दूसरे सेट में अपना आइस वाला स्पेल है, उसके साथ वो जो विंड वाला डैमेजिंग स्पेल है वो लगाया है। उसके अलावा उसमें फ्लिपेंडो और डिसेंडो है, तो फ्लिप करके तुम एनिमीज़ को हवा में उड़ा सकते हो। उसके बाद जब तुम डिसेंडो यूज़ करते हो, या तो फ्लिपेंडो हो गया या फिर लेवियोसो हो गया, उसके बाद जब तुम एनिमीज़ को नीचे गिराते हो ना तो ज़्यादा डैमेज आता है। ऑब्वियसली ट्रोल पे ये सब वर्क नहीं करता, ट्रोल पे काफ़ी सारी चीज़ें वर्क नहीं करती है। उसके बाद ये जो तीसरा वाला है, इस पर एक तो अपन ने कॉन्फिगर लगाया है जो तो काइंड ऑफ रेंज्ड अटैक है, बट उसका डैमेज कम है, फायर अटैक है वो भी। बाकी इस पर एक ये लगा है रिपल्सो, जो बेसिकली एनिमीज़ को दूर फेंकते हैं। एक्यो जो है वो एनिमीज़ को पास खींचते हैं और डिपल्सो दूर फेंकते हैं।
लेकिन वो सब जैसे कि मैंने बताया ना, छोटे एनिमीज पे ज़्यादा काम करता है, बड़े वाले एनिमीज पे Lumos. उतना अच्छा काम नहीं करता। जैसे कि तुमने देखा, अगर तुम उनके ऊपर स्टेप करोगे तो तुम्हारी एचपी जाती है थोड़ी। Revelio. Accio. Compulsor. चढ़ क्यों नहीं रहा है ये? क्या कूदना है क्या ऊपर से? अरे चढ़ नहीं रहा है ये वहां से। नहीं, ओ चढ़ गया। पता नहीं, पहले चढ़ नहीं रहा था। तो ये लेटर है क्या? Dear Siron, I conjured this wee gift for you as a token of my gratitude. If you hadn't stood your ground on my behalf during Quidditch practice last week, I might have left the team altogether, and now we have won the Quidditch Cup. Ravenclaw House would not be the same without you. You are sincerely seen. I guess ये Ravenclaw में थी सिरोना पहले। एक और मैसेज है बहुत बड़ा सा। अच्छा, यही लेटर्स है क्या जो अपन कलेक्ट कर रहे हैं? 3 तो मिल गए यहाँ। This must be Sorona's box of letters. यप, आप लोग पॉज करके रीड I कर should take सकते this हो box of letters to Sorona. She'll be glad to have it back. अगर आप इंटरेस्टेड हो I तो। think that's everything. Sorona will Wasn't expecting a troll actually, but ठीक है, ट्रोल्स कम है गेम में, तो अच्छा हुआ एक ट्रोल से लड़ने का मौका मिला। रिटर्न, अच्छा सीधा सिरोना के पास जाना है क्या? अच्छा, उनको अपन ने इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी दे दिए थे ना, अपने पास ये था, तो अपन को वापस विलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। हॉग्समीड जा सकते हैं अपन वापस। एक्चुअली ये जो जगह है ना, द 3 बटर जो भी है, वो केवन का जो नाम है रेस्टोरेंट का, seems all roads ये lead हैरी to पॉटर की Hogsmeade. मूवीज में भी था। द 3 broomsticks, yeah, broomstick. Talk about taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch.
Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. प्रोफेसर गार्लिक वो हर्बोलॉजी वाली टीचर है जो प्लांट्स के बारे में सिखाती है. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Okay, there we go. शेल्फ मिला जिससे तुम अपने रूम ऑफ रिक्वायरमेंट को डेकोरेट कर सकते हो. एनीवेज एक और साइड मिशन में करने का सोच रहा था जो अपन को पिछले एपिसोड में एक आउल पोस्ट में आया था ना. ये वाला था क्या? एडिलेड ऑक्स. या ये अपने अंकल के बारे में कुछ बता रही थी कि इसका अंकल डिसअपियर हो गया, ढूंढने में मदद करने के लिए. सजेस्टेड लेवल 10, अपना लेवल 26 है. सो बेसिकली मैं ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते एंड जो ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस है ना, जैसे अपने मर्लिन चैलेंज हो गया एंड ऐसे ये बाकी साइड वाले चैलेंजेस, वो सब करने से मेरा लेवल इतना बढ़ गया. एक और चीज़ जो तुम गाइड ये कलेक्ट करते हो, क्या बोलते क्या उसको, फील्ड गाइड एक्सप्लोर करते वक्त हर एक फील्ड गाइड 80 XP देता है. तो जो तुम्हारे स्टार्टिंग के लेवल है ना, वो बहुत जल्दी मतलब जल्दी तुम्हें स्टार्टिंग के लेवल तुम जल्दी क्रॉस कर सकते हो. जो 4, 5, 6 लेवल वगैरह अगर तुम ये सिर्फ फील्ड गाइड भी इकट्ठा करोगे. लेटर ऑन लेवल जो है 20+ वाले, वो फिर ज़्यादा XP लगते हैं हर एक लेवल के लिए. एनीवेज हॉगवर्ट्स जाना पड़ेगा ना वापस. आई गेस हॉगवर्ट्स ही जाना है. हॉगवर्ट्स के कोर्टयार्ड में कुछ बुलाया था इसने. यप. थोड़ा सा किधर है ये? हाँ ये वाला है. ये स्केलेटन किसका है? काफी बार लोडिंग स्क्रीन में दिखाया हो. Handy resource indeed, your field. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. I think it's time to slay some goblins, probably.
फॉरबिडन फॉरेस्ट में क्या ये? फॉरबिडन फॉरेस्ट ऊपर है। हर रीजन के लेवल्स है, तो तुम देख सकते हो कि फॉरबिडन फॉरेस्ट में 20 to 40 है, यहाँ पे 5 to 20 है। ये नीचे वाले रीजन्स में 30 to 40। यहाँ पे अपन अभी क्रॉस नहीं कर सकते, मुझे लग रहा है कोई स्टोरी के हिस्से के बाद क्रॉस करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ तक गया था उसके बाद मुझे क्रॉस करने का कोई तरीका नहीं दिखा। ये सारे लोकेशन 40 के ऊपर, 40 के ऊपर कुछ नहीं है। 40 तुम्हारा मैक्स लेवल है, 40 हाईएस्ट लेवल है। तो तुम जब तक 40 तक जा रहे हो ना, तब तक तुम्हें स्किल पॉइंट्स मिलेंगे, उसके ऊपर स्किल पॉइंट नहीं मिलते। यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट ये रहेगा। आई थिंक कोई गॉब्लिन कैंप वगैरह रहेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा बस, एंड उसके अंकल को बचा के निकल सकते हैं अपन शायद। वो ये अच्छा, ये लैंडिंग पैड्स है, ये भी एक साइड ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ये देखो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म चैलेंज कंप्लीट। तो अगर मैं अपने चैलेंजेस में जाऊँ अभी, लैंडिंग प्लेटफॉर्म किधर रहेगा? एक्सप्लोरेशन में शायद। ये देखो, फर्स्ट वाला कंप्लीट करने के मुझे ये मिला, ये सेकंड। आई गेस ये क्विटेज का, ये क्विटेज का यूनिफॉर्म है फुल। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट वाला मुझे 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढने हैं। जैसे मैंने एक ब्रूम का स्किन भी अनलॉक किया है ना। ये नहीं, गियर, ये दिखने में इतना खास नहीं लग रहा। और कौन से रोब्स है अपने पास? ये भी ठीक है, ये वाला ही था जो पहन रखा था, एक डार्क कलर वाला है, ये भी सही है। आई गेस जो अपन ने कपड़े पहने ना, उसके साथ ये ब्लू वाला ज्यादा जच रहा है। अगर तुम ऐसे फुल पहन लोगे तो तुमने अंदर जो कपड़े पहने ना वो दिखेंगे ही नहीं। ये ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रूम, अरे ब्रूम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, ब्रूम मैंने इक्विप कर रखा है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। अपन को मिला क्या था? हाँ, ये मिला था ना, क्विटेज का यूनिफॉर्म मिला था ये। रेवन क्लॉ के क्विटेज का यूनिफॉर्म। आई गेस बाकी जो हाउसेस होंगे वो उनके कलर होंगे, जैसे रेड ग्रिफिंडोर का, ग्रीन स्लिदरिन का। नॉट बैड, थोड़ी देर अपन इसको पहन सकते हैं। नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, क्योंकि मुझे ये बाकी वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इन वी कैन रॉक इट फॉर सम टाइम। वो एक गोल्डन वाला है मेरे पास, इसको रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाके अनलॉक करना पड़ेगा। एक सेकेंड, Revelio. ये आवाज क्या आ रही है? अच्छा, ये चिकन की आवाज आ रही है। यहाँ पे एक बीस्ट डेन है, पकड़ कैप। I hope Rookwood knows what he's doing. वो निफलर्स है, निफलर्स है। एक सेकेंड, एक दो निफलर पकड़ लेते हैं। आई थिंक इनको निफलर्स ही बोलते हैं। वी नीड लेवियोसो। किधर गई ये? Could this be Mr. X's campsite? Levioso. I'll look after you. Revelio. Levioso.
No need to be difficult. I mean you no harm. Okay, there we go. तो सामने कुछ पोर्चर्स खड़े हैं, उनको फेल क्या आता है? Exhausting. Standing here all day. Descender. Glacier. Potato. Defender. Incendio. इंसेंडियो तो पड़ेगा ही. You've made a grave mistake. Experimenting. I should bring you then, Nora Treadwell. No one. Ranrock's loyalists. Whoa, yeah. Potato. Leviosa. Confringo. Lucky that's all. Descender. Accio. Incendio. That was meant for me. Defender. I won't rest until you're... Now to find out what happened here. Revelio. इन कुछ लेटर या कुछ होगा यहाँ पे. Ancient Magic Focus. I think जो फोकस वाला ट्रेट है वो मे भी अपने कूल डाउन कम करता होगा. Mr. Oaks' trade journal. Ranrock's lot agreed to meet me, but I do feel a tad unease. They amended their request and were angry when I asked questions. I overheard some of their plans in gobbledygook. They are after my rare metal deposits that are suitable for drilling. I am afraid of upsetting them further. They seem rather volatile and I need this transaction to happen. Perhaps we can work out a compromise, perhaps not. Roland Oaks. इतना ही पता चला क्या? Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Assuming कि ये अपना कैंप है, I don't know इसको कैसे. ये अगर लैंडमार्क्स है एक लैंडिंग स्पॉट है. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. ये क्या है? Oh. Flipendo. Descendo. Glacier. Defender. Potato. Stupid. Leviosa. Is this Descendo. No. इसके वो अंकल का मैप कैसे पता चलेगा? एक लैंडमार्क मुझे उधर दिखा. But if you don't fill up so much, you can actually go further. It's true. Eat a big meal, you'll be slowed down, but eat light and you'll be swift. But who wants to be swift? Oh shit.
Oh, this day's gone on too long. ये देखो, ये जो सामने एक रॉक दिख रहा है ना, ये एक लैंडमार्क है जरूर। दूसरा लैंडमार्क कौन सा है? बट ऐसा लैंडमार्क ढूंढने में तो दिक्कत होगी। एक और बार मैप देखा जाए। यहाँ से गए अपन, ये वो टूटा हुआ जगह है, फिर एक ट्री टाइप का, फिर एक खंडर, एंड उसके बाद ये। आई थिंक ये वो टूटे हुए जगह को रिसेंबल करता है। काम करते इस तरफ चलते, क्योंकि यही एक एरिया जहाँ पे मैं अभी तक गया नहीं हूँ, तो हो सकता है उधर ही हो। वहाँ पे कुछ एक खंडर टाइप का दिख रहा है। हाँ वो देखो, वो एक छोटा खंडर, एंड आई गेस ये मेन एरिया होगा। आज का एपिसोड थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि मैं साइड मिशन ना कंप्लीट करना चाहता हूँ। अरे What do we have here? Wait a moment. Oh, good. Accio! Arrest them and incendio! यहाँ पे लेकिन वो गेट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, ये कैंप को क्लियर आउट करते हैं। अगर ये वो एक्चुअल जगह नहीं है ना, तो फिर अपन अगले एपिसोड के स्टार्ट में वो साइड मिशन कंटिन्यू करेंगे। I may have more luck higher up in the keep. Potato! Look at you! Well done! Flipendo! Sendo! Glacier! Flipendo! Perhaps not the best place to be caught alone. Caporso! Descendo! Levioso! Confringo! Caporso! This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. तो यही है। Levioso! Descendo! Confringo! Glad I was never locked up here. अच्छा, स्पॉट तो यही है। Revelio! एक सेकेंड, इसको मैं Accio! Wingardium Leviosa! Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. अबे सर कैसे, थोड़ी जगह दे मेरे को। Flipendo! Sendo! Glacier! Defendo! Revelio! वहाँ पे एक ट्रोल है। Revelio. Petricus totalis.
One less human to worry about. Accio! मेरे गियर स्लॉट्स फुल हो गए. Revelio! Trouble's brewing and I'm without my friends. वो चेस्ट बाहर कैसे है कैसल के? ये तो और अंदर जा रहा है. This castle's hiding all sorts of secrets. What will we find in here? Revelio! The wizard will have no choice but to... I know I heard something that time. Expelliarmus! Accio! Incendio! I will make you. It's punishment to us all who have that human around. Propendo! Descendo! Glixi! Defendo! You only have Ranrock to blame. Aloha Mora. ये मेरा फेवरेट कॉम्बो बन गया अभी. एकदम फटाक से किसी नॉर्मल एनिमीज को फटाक से मार सकती है 4 मैजिक से. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. अरे यार कुछ बेकार वाली चीजें डिस्ट्रॉय करनी पड़ेंगी गियर में से. Revelio. फिर से ग्रीन वाली चीज़ों का ना वैल्यू सबसे कम होता है, तो अगर तुम डिस्ट्रॉय करते हो तो ग्रीन वाली चीज़ें डिस्ट्रॉय किया करो. अभी मैंने इसे तो इक्विप कर रखा है, इक्विप इसे कर लेते हैं, इसका लेवल ज़्यादा है. ग्रीन वाली चीज़ों को टाटा बाय बाय करो. वो इसका लेवल ज़्यादा है. ये क्या सीन है? ऑफेंस, ये डिफेंस बढ़ा रहा है. नहीं, वो वाला ज़्यादा अच्छा है जो मैंने इक्विप कर रखा है. Such arrogance. No! I will make you. Confringo. Compulso. When are you going to... Glacius. Defendo. I won't back. Descendo. No! I will make you. Glacius. Expelliarmus! Arresto Momentum. Incendio! बढ़िया. A boiler door. How to open it?
ये कैसे खोलेंगे? ये रास्ता किधर जा रहा है? यार ये एरिया बहुत बड़ा है। Incendio. Revelio. Incendio. Oh, nice. Lol. आई थिंक ये वाला एपिसोड अभी तक के ये हॉगवर्ट्स लेगेसी के सीरीज का सबसे बड़ा एपिसोड रहेगा। ऑलमोस्ट अपन 1.5 आवर हिट करने वाले हैं। ये मिशन खत्म ही नहीं हो रहा है। One way or another, we'll get what we're owed. डायरेक्ट लड़ ले क्या? अबे कोई स्पेशल एनिमी है क्या? हाँ एक स्पेशल है, वो देखो। लेट्स फाइट ना, डायरेक्टली फाइट कर। How nice of you to stop by. I won't rest. Best the likes of इंसेंडियो कोई आए नहीं। You can't stop us. I won't rest. Send them. Much too slow. Let me Expelliarmus! Arresto Momentum! Glacius! Defender! Back to the bench! Too late for you to learn the error of your ways. आई थिंक ये गोल्डन है, मतलब ऑरेंज है लेजेंडरी वाला। क्या डिस्ट्रॉय करे? +5। यहाँ पे एक इनफेमस फोर्ट है जिसको अपन ने हराया ना, जिनके नाम ऐसे अलग से लिखे होते हैं वो इनफेमस फोर्ट है। This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Explore the Goblin outpost and find Mr. लेकिन मिलेगा किधर, ये क्या?
बहुत दिक्कत हो रही है, एक बार ये गियर फुल हो गया ना काफी दिक्कत होने लगती है फिर। अब सवाल ये है Revelio. ये जो मिस्टर जो भी है अंकल उसके वो किधर मिलेंगे? तो ऊपर एक रास्ता दिख रहा है। थोड़े से और गॉब्लिन्स भी दिख रहे हैं सामने। बहुत सारे वीकेंड वेल्ड पोशन दे रहे हैं। ट्रोल वोल से भी लड़ना पड़ेगा क्या? Revelio. भाई यहाँ से आगे कहाँ से जाए? मुझे लग रहा है इसका अंकल कहीं बाहर ही कहीं पे बंद है। अपन ने एक्चुअली वो अंकल को ढूंढने के पहले उसका वॉन्ड ढूंढ लिया। सीन ऐसा था शायद वो अंकल जो भी है उसका वो कैद है, उसको छुड़ाने के लिए उसके वॉन्ड की ज़रूरत थी। हाँ इस तरफ अपन गए नहीं है ना, इधर ही होगा। यहाँ पे अपन नहीं गए। ये 3 कॉइन का मैं क्या करूँ? एटलीस्ट 30 कॉइन तो भी रखना होगा। Arrest the momentum. Incendio. Ranrock has fooled you all to your demise. You have uncollected reward available in challenge में ना, वो तो बाद में ले लेंगे। अरे यार एक काम करता हूँ मैं, 3-4 ग्रीन वाले जो भी है ना वो सब, इसका लेवल तो कम ही है, इसको डिस्ट्रॉय करो। और किधर है ग्रीन वाले? ग्रीन है, ग्रीन वाले हैं नहीं क्या मेरे पास? अब बस ब्लू वाले पड़े। आई थिंक इसके अंदर होगा उसका अंकल। Revelio. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Yeah, basically तुम यहाँ पे पहले I've already आओगे। found your wand, Mr. Oakes. Yeah. Please, pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. So basically तुम पहले कुछ लोग यहाँ पे पहले आएंगे एंड फिर ये अपन को बॉयलर पे भेजेगा, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि बॉयलर के अंदर मेन फाइट है ये एरिया का, वो जो काइंड ऑफ तुम एक बॉस बोल सकते हो। Oh, thank Merlin. Thank you. Oh. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. How did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be.
I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every knut on me. All I can say is thank you, truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Kind of Ranrock की story थोड़ी सी पता चली अपन को. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Oh, finally, the mission is over. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. अच्छा, मुझे लगा अंदर कैसे आ गया ये. Wasn't expecting a side mission to be this long and इतना detailed, but yeah, it's nice to see कि इन्होंने side mission में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अच्छे से बनाया साइड मिशन. एनीवेज एपिसोड अपन यहाँ का रैप अप करते हैं इधर ही. अगले एपिसोड में सेबेस्टियन का मिशन सबसे पहले उठाएंगे, उसके बाद जो भी कुछ साइड मिशंस और बचे वो कंटिन्यू करेंगे. ऑफ कोर्स सेबेस्टियन का मिशन कंप्लीट करने के बाद और मेन क्वेस्ट और अपन पे आ जाएंगे. अभी तो फिलहाल सेबेस्टियन का ही है अकेला जो मेन क्वेस्ट एक्चुअल स्टोरी प्रोग्रेशन के लिए. जो स्टोरी प्रोग्रेशन वाले क्वेस्ट है वो ऐसे गोल्डन में मार्क्ड होते हैं इस टाइप का. तो एनीवेज आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि साइड मिशन जल्दी जल्दी निपटा के ख़त्म करेंगे, बट ये मिशन ही बहुत बड़ा था. सो यस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.